Sir, are you speaking? Hello, good evening. Good evening, sir. Yeah. होमवर्क हो गया है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. Okay, good. पहले का आंसर क्या है? sin x by 2 plus cos x by 3 का पहले का आंसर क्या है? 12.5. 12. Could you repeat that, sir? फर्स्ट का आंसर क्या है आपका? फर्स्ट Sir, का I got आंसर 12.5. 12.5. Yeah, 12.5 is correct. Very good. सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का? Sir, I got no period. Yeah, very good. I think done and correct. Now, हम discussing composite function. Do you know about composite functions, Rita? No, sir. No idea? Yes. Now, if let's suppose two functions f of such that x to y1 and g एक function है y1 to एक function जो x to y defined है such that h of x is equal to g of f of x is equal to, you can write g of x. जैसे आपने x f of x और g f of x सिंपल मतलब है अगर आपने कोई फंक्शन एक फंक्शन है जो कि x to y है फ्रॉम x to y y1 एंड g
एक फंक्शन जो कि y1 to y है, देन एक वो h of x जो फंक्शन है वो फ्रॉम x to y such that h of x जो होगा वो बेसिकली g of f of x, मतलब अगर कोई फंक्शन लेट सपोज f of x equal to x square, right? Or let's suppose g of x is let's suppose x क्यू है। अब अगर आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि h of x हो, जो कि g of f of x, इसका मतलब है कि आप g में f of x पुट कर रहे हैं, तो x को आप f of x से रिप्लेस करेंगे, तो f of x बेसिकली क्या है, x स्क्वायर, राइट? तो अब g x स्क्वायर और x को आप x स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, इट मींस कि x क्यूब का स्क्वायर, so that is x power 6. So this is a composite function. Okay, sir. इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेट डिस्कस और डायरेक्ट you can go through the code question. Let's suppose one question is if f of r power fx is equal to x square g of r for r gx is equal to 2x plus 1. Find FOG and GOF also, so GOF is not equal to FOG. ये GOF का मतलब है कि G में आप f of x पुट कर रहे हैं, do that. F of g is equal to 4x square plus 4x plus 1, and g of f is equal to 2x plus 1. G of x is equal to 2. G of f is equal to 2x plus 1. no. आपने FOG निकाला, राइट? FOG, इसका मतलब है कि f में आप g of x इनपुट डाल रहे हैं, g of x, तो f में आप g of x क्या है, 2x plus 1. Now x is basically 2x plus 1, so f of 2x plus 1 का मतलब है आप x को 2x plus 1 से रिप्लेस करें, so x स्क्वायर को जगह पे आप 2x plus 1 का स्क्वायर कर देंगे, बेसिकली x को आप इसमें जो आप इनपुट x है, आपका यहाँ पे इनपुट 2x plus 1 है स्क्वायर, ये होगा आपका FOG, सेम आया था। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। GOF का मतलब है, मतलब G में fx आप फंक्शन को पुट कर रहे हैं, तो G fx क्या है, बेसिकली fx इज x स्क्वायर, सो नाउ x को आप बेसिकली G फंक्शन में आप x को x स्क्वायर से रिप्लेस करें, सो 2x स्क्वायर प्लस 1, या क्लियर है?
यही आया था ना सेम आंसर? Yes, sir. Okay, now next question. Let fx is equal to 1 plus x 3 minus x. 0 to x is 0 to 2 x is, and this is barabar x is 2 to 3. Find f o f x. f o x. f o f x. Do you know how to do that? See, आप ट्राई करेंगे श्वेता? Yes, sir. ओके, ट्राई कीजिए. Sir, is it 2 plus x, 4 minus x, 2 minus x, and x? So once again. 2 plus x, 4 minus x, Yeah. 2 minus x, and x. Yes. x नहीं आएगा. I think आपने मिस्टेक किया. इंटरवल में आपने ब्रेक किया, और इंटरवल में बेसिकली आएगा सब 0 से 1 के इंटरवल के लिए 2 प्लस एक्स होगा, एंड 2 माइनस एक्स होगा 1 से 2 के लिए, एंड 4 माइनस एक्स से 2 to 3 के लिए होगा. जिससे आप f4 x निकालेंगे, इसका मतलब है कि x को आप fx से रिप्लेस करें. ना 1 प्लस fx हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है आपका 1 प्लस x 0 pencil has been discharged. Wait 1 minute. Pencil.
देखिए आप तो इसमें x को हर जगह पे fx से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो इंटरवल में भी आप fx को रिप्लेस करेंगे ना, x को fx से। सो 0 से fx इज 2, नाउ 3 माइनस f of x, 2 to f of x लेस देन 3 ए होगा, एंड आल्सो इंटरवल भी होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहां पे। अब दोनों का इंटरसेक्शन से आपका कंबाइंड आंसर आएगा। वेट 1 मिनट, पेंसिल is charging. Charge 50% charge. तो आपका जो होगा 0 से लेके f of x is now fx is equals to f of x 2 and 0 to x is 0 to 2, and now 3 minus f of x and 2 to fx is 3 and 2 to x is 3। आपने इस तरह से किया है ब्रेक। नाउ अब आप इसको बेसिकली ब्रेक करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू, आपको एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स, नाउ तो 0 से लेके 1 प्लस एक्स लाई बिटवीन 2 एंड 0 टू एक्स 2, ये हो गया। एंड नाउ 1 प्लस 3 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो अभी x को 0 से लेके 3 माइनस एक्स 2 एंड 0 टू एक्स, एफ एक्स को मैं अभी 2 ले लिया। नाउ इस इंटरवल इसके लिए करते हैं, सो 3 माइनस एफ एक्स करेगा पर 1 प्लस एक्स पुट कर रहे हैं। सो नाउ इंटरवल 2 से 1 प्लस एक्स 3 पे क्लोज ब्रैकेट and 3 minus fx is 3 minus x, 3 minus x, so and यहाँ पे आपका था x is सॉरी 0 से 2 के इंटरवल में डाल देना आप। now 1 plus 3 minus x, now 0 से लेके 3 minus x 2 and 0 से लेके x is 2, now 1 3 minus 3 minus 3 minus fx is now taking is 3 minus 3x, yes, and 3 minus x से लेके इंटरवल इज आपको 4 फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। आपने इसी तरह किया ना था, यहाँ पे आपने पहले इस फंक्शन में मैं पुट कर रहा हूँ, इस फंक्शन में वैल्यू पुट किया एफ एक्स का, जो कि 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, इस इंटरवल के लिए सॉल्व किया दोनों का। अब ना इस इंटरवल इसके लिए सॉल्व करता हूँ, तो 3 माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस किया, और 2 टू 1 प्लस एक्स 3 एंड 2 टू एक्स इज 3, नाउ 3 माइनस एक्स एंड 2 टू 3 माइनस एक्स 3 एंड 2 टू एक्स इज 3। अब इतने को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 इंटरवल मिलेगा बेसिकली। एक कोई फाई आ जाएगा, उसमें वैल्यू लाइक फंक्शन नहीं होगा एफ फोर जी। श्रुता गॉट इट? आपने Yes, sir. कोई एक चीज आपने मिस किया है, जिसकी वजह से आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एंड लिखो ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इस दोनों की इक्वालिटी ये सबका ले लिया। इसका भी ध्यान रखना है, आप एक चीजें को आपने मिस किया होगा इस इंटरवल को। आपने इंटरवल में लिखा था? No, sir. ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इस इंटरवल को आपको लिखना है। हो सकता है कि एक्स उसमें 5 हो, जो आपका एक्स आया है ना उसमें फंक्शन ही नहीं हो एफ जी।
एंड आप लिखेंगे x इक्वल टू, आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा। Okay, एंड का sir. मतलब इंटरसेक्शन। गॉट इट? Yes, एक sir. होमवर्क, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज if fx is equal to 2 plus x, if x is greater than equal to 0, 2 minus x if x is less than 0, then आपको बताना है f o f x। This is a homework question. Now, next topic is inverse of a function. Do you know about inverse of the function? No, sir. See. जैसे अगर आपने f of x एक फंक्शन है, लेट्स सपोज x स्क्वायर, सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और रेंज इज, और fx इज लाई बिटवीन 0 to infinity, greater than equal to 0, राइट? तो अगर आपको इनवर्स निकालना है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ x इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस माइनस, राइट? और नाउ Yes, sir. रिप्लेस x टू y, y को x कर दीजिए फिर से, इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर x। तो a क्या हो गया? रूट अंडर x इज इनवर्स फंक्शन, राइट? इनवर्स फंक्शन हो गया आपका प्लस। तो अब नाउ मैं डिफाइन करता हूं इसको। बेसिकली इनवर्स फंक्शन किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स फंक्शन सबके लिए नहीं होता है, ओनली फॉर वन वन एंड ऑनटो। फंक्शन क्या होना चाहिए? वन वन एंड ऑनटो। तो क्या बताइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वन वन फंक्शन है? क्या इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा? मैं सही किया हूं कि गलत? अगर मैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले आऊं तो क्या ये फंक्शन है? पहले बताइए, ए वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं फंक्शन के लिए वर्टिकली टेस्ट बताया था क्या? वर्टिकली टेस्ट मेथड से कैसे फंक्शन है और नहीं है उसका फाइंड आउट करने के लिए, I y don't इक्वल think so, sir. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होगा, राइट? Yes, बट sir. अगर आपको एक फंक्शन को, मैंने बताया था कि फंक्शन कैसे डिफाइन, अगर उसका यूनिक इमेज आएगा तो फंक्शन होगा, और एवरी का वर्टिकली टेस्ट से कैसे पता करना, ग्राफिकली से कि फंक्शन है और नॉट। अगर आप y एक्सिस से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो दिस इज फंक्शन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज बेसिकली फंक्शन। और लेट्स सपोज आपने एक इलिप्स का, इलिप्स होता है इस तरह से, इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो जगह पे ग्राफ को कट कर रहा है। तो अगर ओनली वन पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है देन यू कैन से कि फंक्शन है। अगर वन वन मोर देन वन कट कर रहा है देन यू कैन से दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, राइट? सो फंक्शन बेसिकली किसके इनवर्स किसके लिए डिफाइंड है? इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर द वन वन एंड ऑनटो फंक्शन। मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए एंड वन वन, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए।
अब देखिए ए क्या इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन लिखा हो क्या इसका इनवर्स होगा? No, sir. Yeah, very good. So define with let if function such that from a to b be a 1 and onto function 1 and onto function then there exists a unique function g from b to a such that fx equal to y. This implies that g of y is equal to x for all x belongs to a and y belongs to b. जैसे देखिए एक एग्जांपल समझते हैं. लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स एक फंक्शन 1 फंक्शन लेते हैं जिसका डोमेन a इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, राइट. नाउ b इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8 and f of a and f of a function a to b from a to b is given by f of x is equal to 2x. Then write f and f inverse as a set of ordered pair. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है. क्वेश्चन बना कि फंक्शन एफ है जो कि ए टू बी है. सॉरी, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए. एग्जांपल है ए जिसका डोमेन है 1, 2, 3, बी है 2, 4, 6, 8. ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is given by f of x equal to 2x. Then write f of f and f inverse as a set of order pair. ऑर्डर पेयर का मतलब देखिए जैसे a to b लिखना है फंक्शन a to b. अब इनवर्स फंक्शन होना चाहिए मतलब 1 एंड ऑन टू 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स ए में, बी में आपका 2, 4, 6, 8 इस तरह से आप बनाएंगे. तो ए बेसिकली लेट्स सपोज एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया बेसिकली? पहले ए डोमेन होता है, ए डोमेन एंड दिस इज रेंज, राइट. तो ऑर्डर पेयर आप क्या लिखेंगे? एफ जो बेसिकली ऑर्डर पेयर में सेट में लिखेंगे. सेट लिखना है बेसिकली एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर. मतलब एक्स डोमेन रेंज 1, 2, 2, 4
3,6, 4,8, राइट। नाउ एफ इनवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, राइट। सो एफ इनवर्स का जो ऑर्डर पेयर आएगा सेट का, वो बेसिकली 2,1, 4,2, 6,3 एंड 8,4। आप देख सकते हैं कि एफ इनवर्स का जो होगा, जो एफ का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का रेंज होगा। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। और जो रेंज ऑफ एफ होगा वो बेसिकली डोमेन बन जाएगा। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर है श्रुता? Yes, sir. I don't know. Okay. Now, next question is, let's suppose if fx is equal to 3x minus 5, find f inverse of x. f inverse x आपको बताना है। पूरा क्या होगा आंसर? f of x equal to y equal to basically 3x minus. Sir, is it x plus 5 by 3? Yeah, very good. f inverse x is x plus 5 by 3. Very good, correct. Now let f f is a function from R to R be defined by fx is equal to e power x minus e power minus x by 2 is fx invertible if so find it। इन्वर्टिबल्स का मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहले तो आपको ये बताना है कि इसका इन्वर्टिबल है या नहीं, और आपको बताना है कि अगर इन्वर्टिबल है मतलब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन यू नीड टू फाइंड द इन्वर्स। तो देखिए पहले नंबर आपको अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है मतलब आपको वन वन फंक्शन ऑन टू चेक करना पड़ेगा कि दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट, ऑन टू और नॉट। तो वन वन फंक्शन कैसे चेक होगा? वन वन फंक्शन वन वन हो
कैसे चेक करेंगे? ठीक है, जो भी वन वन फंक्शन होगा आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन वी कैन से कि फंक्शन इज वन वन। ऑन्टो के लिए आप अगर मोनोटोनिक होगा, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आएगा, अभी अभी कोडोमेन क्या, रेंज क्या, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर आर। अगर रेंज भी रियल नंबर आ रहा है, देन वी कैन से कि range equal to codomain, so this the function is onto function. So now one one and onto, then we can say कि this is a invertible function, f x equal to e power x minus e power minus x by 2, this is a invertible function. If invertible function, then we can calculate, we can find out the f inverse, right? श्वेता आप कर लेंगे या मैं इसको सॉल्व कर दूं? अच्छा क्वेश्चन है। Sir, I'll try. ओके, वेरी गुड। Sir, could you solve the question? Yeah. Wait 1 minute. क्वेश्चन नंबर ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वर्टिबल है और नॉट के लिए चेक करना पड़ेगा वन वन है और ऑन्टो है या नहीं है। वन वन एंड ऑन्टो चेक करना पड़ेगा। नंबर वन, so fx is function e power x
minus e power minus x by 2. So find out the f dash x. F dash x is basically e power x plus e power minus x by 2, right? So we can write e power x plus 1 upon e power x by 2, that is e power 2x plus 1 upon 2 e power x. So basically this is a strictly increasing, right? E power 2x is greater than 0 for all x, for all x. So this function is strictly increasing, right? Exponential function यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना हमेशा. So we can say कि which is a basically this is a strictly increasing, strictly increasing f dash x, because f dash x greater than 0. Now, so this is a, we can say this is a 1 1 function, 1 1. Strictly increasing or strictly decreasing, then function is 1 1. Now check onto or not. मतलब 1 to on के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, range equal to codomain, right? So let y equal to fx. So now y equal to basically e power x minus e power minus x by 2. So you can see this is basically a strictly monotonic increasing. So now if अगर आप minus infinity put करेंगे, then आपका क्या आएगा फंक्शन एफ एक्स. अगर आप f of minus infinity and f of infinity स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आएगा एफ एक्स का. सो रेंज ऑफ एफ एक्स जो होगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोडोमेन है, सॉरी कोडोमेन जो गिवन है वो बेसिकली रियल नंबर है और रेंज भी आ रहा है रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो दिस इज मींस वी कैन से कि ऑन्टो फंक्शन, राइट? बिकॉज रेंज of fx, range of fx equal to codomain of fx, codomain of fx. So now we can say कि this is a onto function, onto function. Now 1 1 and onto both, hence fx is fx जो है basically 1 1 and onto is 1 1 and onto. So it means this is a invertible. This is a invertible function. मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन. क्लियर है? एक क्वेश्चन क्या था कि आपको चेक करना था कि इन्वर्टिबल है और नहीं, इज इन्वर्टिबल और नॉट इन्वर्टिबल, राइट? और नाउ अगर इन्वर्टिबल है तो सो इट्स फाइन, मतलब इन्वर्स फाइंड करना है. श्रुता क्लियर है? श्रुता यस सर. तो आप इन्वर्स निकालेंगे ना. बस आपको क्या करना है, y इक्वल टू जो आपका है y इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, यानी कि y बराबर ई पावर 2x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 ई पावर x है. तो प्लस लिख दिया तो माइनस में. नाउ सो y into 2ex is equal to e power 2x minus 1. E power 2x minus 2 times exy minus 1 is equal to 0. So now e power x को आप अगर t मान लेंगे, e power x को ले सपोज t, तो बेसिकली t स्क्वायर माइनस 2ty minus 1 इक्वल टू 0 लिखा ना. t इज इक्वल टू बेसिकली t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2y प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2. सो e पावर x आपने माना है e पावर x, तो
e power x is equal to 2y plus minus 2 times root under y square plus 1 by 2. So e power x is equal to y plus minus root under y square plus 1. Now अब क्या करेंगे, x को आप रिप्लेस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं log y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 1. नाउ x को आप y से y इक्वल टू log x प्लस minus root under x square plus 1. It means f inverse y is equal to log of equal to log of x plus minus root under x square plus 1. This is the final answer. ये आपका इन्वर्स है, f inverse x. Clear है श्रुता? Any Yes, doubt? sir. Any doubt? No, sir. Okay, so I've given 2 homework question. You can do. Okay, Okay. sir. Bye. Good night. Thank you, sir.